हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम वेरी रेलिवेंट recent current affairs which can be really relevant for your exam. So kindly do let me know whether I am audible. There is no technical glitch, then we shall start. We have with us a lot of people at this late hour. I can see a lot of people who have already joined. So we have with us Era, Riddhi, Sham, Sonali, then we have Shivangi, Nisarga, Anshul, then Divya. I can see Shwetang, Bidhan, Naman, Zing, Akansha, Aditya, Venkat, and I can see Akshara, Divakar, Shubham. So many people are live, so I hope you all are doing well. आप सब खुश हैं, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं. You all are enjoying your preparation. My dear students, every year the current affair part is sometimes little overwhelming also. हमें पता नहीं होता सर what should be the boundaries. Okay, सर सारी चीज़ें ही important है. मैं आपको एक रोड मैप भी दूंगा लास्ट के 14 डेज में आपको करंट अफेयर्स को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए. हाउ मच इज़ टू मच, हाउ मच इज़ इनफ. ओके, बिकॉज इट्स एन ओशन. यू कैन सी दैट देर इज एन इम्प्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन every next trivia or every single trivia can be a current affair, but we have to be very exam oriented. Believe me, my dear students, when I say so, you need experts guidance for this thing, because each and every trivia cannot be current affair. You already are having a lot too much in your plate. So let us begin. When we talk about this thing current affair or media aptitude, you can approach it from two perspectives. One is the recent happenings and other is general media aptitude. So general media aptitude will be covering let's say you will find a lot of questions which are related to art and culture. So let's say Yakshagana, which it belongs to which state. Okay, or I can if I ask you a certain kind of folk theater, Nautanki belongs to which state, you will find several questions. Whatever I am telling you, it's from my experience, it's all from previous year questions. Okay, I strongly believe, I am of firm belief that at this last hour our main focus, our reference should be PYQs. ठीक है, जो PYQs में पिछले लास्ट कुछ सालों में पूछा है वहीं तक सीमित रखना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. देन न्यूज़पेपर circulations, editors and taglines. This is one of the most frequently asked questions. ये हमारे एप्लीकेशन पे टेस्ट भी बना रखे हैं, इतनी बार हमने कवर कर रखा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है, इसके करंट एडिटर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना है. ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक नया टेस्ट अपडेट भी कर दूंगा एप्लीकेशन पे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो. देन ICT, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड सोशल मीडिया. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई नया अपडेट आया है. इसमें जो आपके जनरेटिव AI होते हैं, LLM मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उन सबको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है. ओके, ओनली रिग्रेटिंग दैट केम अक्रॉस योर चैनल आफ्टर सो लॉन्ग. सो कोई बात नहीं सुकन्या, जिस दिन हम जागते हैं उस दिन ही सवेरा होता है. आपको लेट मिला चैनल पर, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है. सो आई विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस. देन आपको चेयरपर्सन लर्न करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आप लोग रेजोनेट करेंगे. मैंने इतनी बार बोला है आप लोगों को कि आप PYQ सॉल्व कीजिए. जो मैं कह रहा हूँ, हाउ मेनी ऑफ यूर रेजोनेटिंग की ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है. ठीक है, अगर आप रैंडमली कुछ भी पढ़ेंगे, बिकॉज देखिए अगर मैं आप चाहूँ ना तो इट कैन बी अ रियली गुड क्लिक बेट वीडियो. ठीक है, करंट अफेयर्स इज समथिंग, उस पर बहुत सारे व्यूज आते हैं. मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगा आपके साथ, क्योंकि आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर. एवरी सिंगल ट्रिविया कैन नॉट बी करंट अफेयर. ठीक है, बट थिंग इज दैट करंट अफेयर्स आर टू स्पेक्युलेटिव. समटाइम्स दे कैन आस्क यू 2-3 questions, sometimes even 3-4 questions have been asked. June 2023 there were some 3-4 current affairs. Sometimes there are none. ठीक है, पिछली बार एक भी करंट अफेयर नहीं पूछा. सो यू हैव टू बी an intelligent aspirant also. ठीक है, देन अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम नहीं पूछा. सो ग्रैंड प्रिक्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड, कांस फिल्म फेस्टिवल, ऑस्कर, पुलिट्जर प्राइज. इस बार क्या हुआ है, इस बार बुकर प्राइज अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देन मीडिया लिटरेचर, हु इफ देयर वाज न्यू बुक, देयर वाज न्यू लिटरेचर एडेड टू योर सब्जेक्ट. ठीक है, सेवरल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन दिस. देन इंडियन ब्रॉडकास्टर, प्रसार भारती से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सारी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रसार भारती से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो इंपॉर्टेंट होगी.
न्यू मीडिया लॉज के अंदर अगर भारतीय न्याय संहिता के अंदर जैसे मीडिया लॉज से संबंधित कोई संशोधन हुआ है, कॉपीराइट एक्ट में संशोधन हुआ है या किसी ऐसे एक्ट में संशोधन हुआ है जो मीडिया से संबंधित है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज कीजिए कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डेफेमेशन, ये सारे जितने भी लॉज हैं, ठीक है, ये सारे मीडिया से संबंधित माने जाते हैं। अगर कोई एक लैंडमार्क केस आया है जो मीडिया की प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन मीडिया एजेंसीज के चेयरपर्सन पता होना चाहिए। ये स्टेट ब्रॉडकास्टिंग के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक टेस्ट है। आप हमारे टेस्ट सीरीज में जाएंगे ना, उसमें एक फोल्डर है करंट अफेयर एंड जनरल एप्टीट्यूड, इस करके कुछ एक फोल्डर है, उसमें आपको डेज से रिलेटेड, टैगलाइन से रिलेटेड, चेयरपर्सन, वो सारे ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए। आई विल अपडेट न्यू टेस्ट एज वेल, ठीक है। देन मीडिया ओनरशिप, अगर कोई बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है जिसको किसी दूसरे मीडिया संस्थान ने टेक ओवर कर लिया, वो सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं फिर कहूँगा जो भी हम करेंगे इट हैज़ टू बी एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। So let us begin. First of all, you all give me your attendance, give me that smiley so that I can know you all are happy. I can, I can see a lot of people have joined, 45, 50 people at this late hour. Or I guess in India it is 10:50 now, at night. Here at my place it's 10 in the morning. Okay, so very good evening to all of you. आप लोग बहुत सीरियस बच्चे हो तभी इतनी रात को लाइव हैं, तो एक बार सारे बच्चे मुझे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइली दीजिए। वेरी गुड वैष्णवी, so that I will get to know that you all are happy. Okay, those of you who are the main character of your film, give me those smileys. Very good Ram. And those of you who are just side characters, वो ऐसे मुंह सटा के बैठे रहो, ठीक है। गुड वेंकट, गुड एवरीबडी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉगमा 25. If you ask me, dear student, this should be the most important current affair, and still I am telling you that it's all speculative. It might be that there is no current affair in your exam. सर, और आपको मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर जो आप पढ़ा रहे हो उसका रेलेवेंस क्या है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एजुकेटर हैज़ टू बी ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो सब एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। वाई, देखो बेटा, एक डॉगमा 95 करके फिल्म मूवमेंट रही थी जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, ठीक है। देखो PYQ में अगर दिखाऊं, जून 2024 में एक PYQ पूछा था डॉगमा 95, ठीक है। एक शायद से 2021 का PYQ है डॉगमा 95, ठीक है। सो दिस इज समथिंग which is very relevant, very important in film movements, in film aptitude. If somebody is a film student or a lot of you who are aspiring to do their PhD in films, this becomes important. I am still telling that it's very speculative, they might not ask it, but it's my responsibility to discuss it. So the एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर और मीडिया एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब why they are asking you these questions. They assume that being a media aspirant, being a media scholar, aspiring media scholar, you are somebody who must be well versed with what is going in media, ठीक है। तो ये तो मान के चलेंगे कि वो क्या आप अखबार पढ़ते होगे, न्यूज़ पे ध्यान रखते होगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे टैगलाइंस हैं या मीडिया से रिलेटेड कोई नए लॉज आए हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, ठीक है। सम ऑफ यू गेट्स टू ओवरवेल्म्ड कभी कभार, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। सो आप जब हम डॉगमा 95 की बात करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्शनरी, रेवोल्यूशनरी एक मूवमेंट थी, आप फिल्म मूवमेंट कह सकते हो। वाई डॉगमा 95? बिकॉज इट केम इन 1995, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ Danish filmmakers, most important and most prominent names were Lars von Trier and Thomas Winterberg. If you have seen this film, The Idiots, please watch it. Okay? They came up with a very revolutionary manifesto of filmmaking, and see, everything is connected, interconnected with each other. This was hugely inspired by French New Wave. Okay? If you go through the works of Andre Baza and Kahirdu Cinema's articles, it was actually an imitation and upgradation of that that manifesto of French New Wave, where a group of filmmakers, they were talking about the essence of filmmaking. Okay, मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में इसका मतलब समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कि 90s में आप देखेंगे, 80s में, 90s में खासकर एक बहुत ही ज़्यादा एक influence of VFX in filmmaking could be seen in Hollywood filmmaking, where the director or the creative people, they took a back step, and the VFX or creating a spectacle became
the major objective of filmmaking, that how can we create a spectacle. Let's bring some dinosaurs, okay, something which cannot be seen through naked eye, human eye, something which is which create a spectacle out on screen, okay. So their hypothesis or their thinking was that the director or the creative people, they have taken back step, and the director has just turned into a project manager, where he is just bringing together people and just creating this product so that profit could be maximized. So there were group of filmmakers. The most prominent were Lars von Trier and Thomas Winterberg. They came in, they created this manifesto. There were 10 pointers, like they are not going to use non-diegetic sounds, like everything should be captured within camera, shooting must be performed on the location without providing props or sets. So the major focus was that the essence of filmmaking is storytelling, ठीक है, और the focus should not be on paraphernalia कि हम बड़े से बड़े कैमरा ले आएं, बड़े से बड़े सेट को इरेक्ट कर दें, ठीक है, बड़े बड़े साउंड डिजाइनर ले आएं, कुछ इस तरह का म्यूजिक क्रिएट कर दें. द एसेंस शुड लाई इन फिल्म मेकिंग. पैराफर्नेलिया शुड टेक अ बैक स्टेप. दिस वाज द एसेंस ऑफ डॉगमा 95. आई एम अगेन टेलिंग यू, आपको पूछना चाहिए मुझसे, सर आप क्यों पढ़ा रहे हो हमको ऐसी चीज, क्योंकि बेटे 2-3 बार ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी गई है. इसलिए मेरे हिसाब से अगर जो लोग इन सारे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है, ठीक है. नहीं भी पूछते हैं तो कभी ना कभी फ्यूचर में जाके आपसे डॉगमा 25 के बारे में एज अ फिल्म मूवमेंट जरूर पूछेंगे, बिकॉज इट इज द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू फिल्म मूवमेंट, ठीक है, लाइक फ्रेंच न्यू वेव, लाइक जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, लाइक डॉगमा 95. So this was a manifesto which was created in 95. Later it lost its relevance with the coming up of newer technologies, newer kind of facilities, ठीक है. So it also included directors must not be credited, no superficial action, there can be no optical work or lens filters, मतलब कैमरे में ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए. फिल्टर्स आप यूज़ करते हैं या आप डिफरेंट फोकल लेंथ यूज़ करते हैं, इट शुड बी एज इट इज़. The camera should try to capture reality. The focus should be on filmmaking. Now this was rehashed, remixed in Cannes Film Festival this time. A new rehashed version of this Dogma 95 Film Festival was launched, Dogma 25. So why 25? Because it was launched in 2025. Why Dogma 95? That previous movement was launched in 1995. As simple as that. Okay. So the Dogma 25 was officially announced at Cannes Film Festival on May 17 with notable directors. You should remember the names of these 5 directors, okay. So they are group of Danish and Swedish filmmakers. Remember this thing, they can ask you which among the following are associated with Dogma 25. If they are not asking you this time, they will be asking this in December 2025. I can foresee this, okay, because from the context of unit number 9, this is one such film movement which is very relevant, ठीक है. It is gaining a lot of academic attraction. A lot of research papers are being written on Dogma 25, how it can be applied in other setups, like how Indian filmmakers can use it, how other filmmakers can use it. That's why it becomes very relevant. Then a group of Danish and Swedish filmmakers has relaunched the notorious, what is avant-garde experimental, okay, Dogma 95 movement with a manifesto updated for internet age, ठीक है. So the new the times in which we are living in, it has its own share of problems. So now a lot of content is driven, there is a new concept called algorithmic cultures. So have you heard of this thing, algorithmic cultures? Algorithmic cultures, okay. What does this mean? So this entire idea of computational technologies, ठीक है, in the form of let's say as simple as this buzzword artificial intelligence. Now this is a buzzword, everybody is using artificial intelligence. जैसे होता था ना पहले, कुछ चीज़ समझ नहीं आती थी कि ये भगवान ने करा दिया होगा, वैसे आजकल किसी को कुछ समझ नहीं आता, हम बोल देते हैं ये AI कर देता है, ये AI कर देता है. बट इट इज़ being media scholars, we should try to engage with it in more academic manner, ठीक है. So algorithmic culture, coming back to algorithmic culture, the idea that computational technologies in the form of, let's say, codes or this data sets, they define our way of living. मैं अगर आपको उसको बहुत ही simple example दूँ, in newsrooms, the idea of editorial independence, where earlier it needed a lot of human intervention, where people humans, they
used to decide what kind of story should be covered. With the very basic idea of, let's say, the gatekeepers. You must have been, you know, learning about agenda setting theories and all those things. Now the algorithms are deciding what kind of story should be covered. These data sets, something which is more trendy or on Twitter, isn't it a new kind of algorithmic culture which needs, you know, new kind of human intervention, like machines deciding what kind of story should be covered? Then algorithmic cultures, if you want to learn more about it, try to resonate it with, you know, the idea how you are consuming content, the idea of you know, what, there is one term, I'm forgetting the, you know, this term. I'll send it on the Telegram group. So how you are getting news, okay, you are getting news according to your preferences. A lot of times whatever your biases are on Twitter, okay, you follow certain kind of ideology, you have certain kind of preferences, you are only going to get the news which aligns with your you know, preference, with your ideology, with your confirmation bias, okay, and you are never going to get opposite view. So this is also kind of you know, not filter bubble, it was, you know, some kind of a bubble, I'm forgetting that terminology. So this is all algorithmic culture. Now they are also including this algorithmic culture in their manifesto, that no, we are not going to, you know, get influenced by algorithmic culture. So a group of Danish and Swedish filmmakers has, yes, echo chambers, right, very good, Vaishnavi. The idea of echo chambers, that something, so I have certain confirmation bias, I have certain stereotypes in my mind, okay, I am following certain hashtags on my Twitter, on my YouTube, I am only going to get, you know, those kind of feeds or those kind of recommendations. So where is, you know, the idea of free democracy, or like you are never going to get that marketplace of ideas, okay, where the best of ideas are going to get more reach. So what is echo chamber? So you have certain kind of tendencies, you have certain kind of ideologies, you think in certain, you know, certain manner, the algorithm is reading it and it is only going to recommend you on your feed because it wants you to keep scrolling, okay. So this is something you should all think about, being media scholars, being media practitioners. So Dogma 95, coming back to Dogma 95, a group of Danish and Swedish filmmakers. So now this class is more focused on this movement because I know this is going to be very relevant in other allied exams. Dogma 25 is going to get asked, okay. So please read about it. And dear students, I keep telling you that when we are reading about current affairs, you should also go through certain academic articles, some news articles. If you open this you know, chat box, not chat box, description box, I have pinned the links of few articles which I found you know, were really brevetous and they were to the point. So you please go through all these articles for your better understanding, because please do not lose this you know, capacity of reading articles and going through content on your own also. Please don't be too much dependent on this spoon feeding. So what are this manifesto? What is the manifesto? They have come up with 10 points of manifesto regarding Dogma 95. Now I have gone through one CUET PG paper of Jamia, okay. It had one question, among the following 4 points दिए थे, इनमें से कौन सा Dogma 95 का manifesto नहीं था, ठीक है. So इस तरह से questions पूछे गए हैं. इनका एक नया manifesto है, they have come up with 10 pointers. The first is that script must be original and hand written by director. ये कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर का इंटरवेंशन है, जो स्क्रिप्ट है वो हाथ से लिखनी चाहिए. वो कह रहे हैं कि जब अल्फाजों को जब हम पेपर पे उतारते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन या उसका जो आउटपुट होता है वो डिफरेंट होता है जब हम उससे जब हम टाइप करते हैं. तो ये इनका पहला मैनिफेस्टो का जो पहला पॉइंट है, द स्क्रिप्ट मस्ट बी ओरिजिनल एंड हैंड रिटन बाय डायरेक्टर, ठीक है. We compel ourselves to write the script by hand in order to nurture the kind of intuition, the idea that, you know, this is, I can resonate with this thing. When I write on paper, you know, we cut certain words, then we rewrite it, then we have a, you know, certain material materiality of this paper, you know, we engage in altogether different process when we compare it with, you know, when we type on computer. So the very first point of this manifesto is that the script must be original and handwritten by director. So computer shouldn't be used while writing the script. At least half of the film must be without dialogue. So they are stressing upon the importance of silence
as an element of storytelling. ठीक है, silence speaks 1,000 words. We know that a picture speaks 1,000 words, but silence also speaks 1,000 words. So at least half of the film must be without dialogue. This is the second manifesto. The internet is off limits in all creative process. So they commit to produce the films relying on real people within our physical reality. You will find that a lot of films, they are they are too focused on this, the narrative is focused on applications. So there was a recent film on Z, Logout. Okay, a lot of times where people are meeting through apps, people are dealing with apps. So the focus should be on physical people, physical realities. We only accept, this is very important, see, they will only accept funding where there is no clause of altering the content. देखो कितना relevant है जब हम editorial independence की बात करते हैं, creative independence की बात करते हैं. Funding is a very important thing. Okay, who funds you? हम मीडिया में भी तो ये बात करते रहते हैं ना. The entire idea of political economy of media. Who funds media? Those who fund the media, they have their own interest in it. So we will only accept the funding with no content altering condition attached. Okay, this is the fourth point. No more than 10 people behind the camera. So the focus shouldn't be on paraphernalia, it should be on filmmaking, it should be on telling the stories, okay, which resonates with the people. The film must be shot where the narrative takes place. Okay. The seventh point is we are not allowed to use makeup or manipulate faces and bodies unless it's a part of narrative. So this becomes so important, if you look at popular culture, if you look at Bollywood films, Hollywood films, the protagonist, okay, they have to look a certain way, their body types are of a certain way, their skin tones are of certain ways. Okay, those kind of skins and those kind of hairlines, they are not practically possible. A lot of times through makeup, through other surgeries, all these things are achieved. So their manifesto also says that we are not allowed to use makeup or manipulate faces and bodies unless it's the part of the narrative. Okay, just as we strive to maintain the authenticity of location, we also want to portray the human body without a filter. We celebrate it. Okay, so their skin also has a lot of other things. There can be marks, there can be warts, there can be birthmarks. They are all hidden. So it's all seamless in popular films. Okay. Then everything relating to films production must be rented, borrowed and found or used. So they are also stressing upon reusing. Okay. The focus shouldn't be on vast or let's say massive budgets. It should be on storytelling. We commit to making films using objects that already exist, renounce the ahistorical and self-destructed culture of consumerism. The film must be made in no more than 1 year and create the film as it is your last. मतलब ऐसे फिल्म को बनाएंगे जैसे ये हमारी आखिरी फिल्म है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. मुझे पता नहीं कहाँ यूज़ होगा, पर ये आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं होगा. ये एक तरह का एक नया फिल्म मूवमेंट है जो सारे मीडिया स्कॉलर्स को पता होना चाहिए. मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए 2 लिंक्स डाले हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा. डॉगमा 95 के बारे में भी पढ़िएगा. इनके जो फिल्म मेकर्स थे लार्स वॉन ट्रायर एंड थॉमस विंटरबर्ग, इनकी कुछ फिल्म्स के अगर मैं नाम लूँ तो द इडियट सबसे फेमस फिल्म थी. ठीक है, फेस्टिन हो गई. और अभी तक इस जो डॉगमा 25 से रिलेटेड कोई फिल्म बनी नहीं है. ये मैनिफेस्टो इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल जो 2025 में आया था उसमें ही अनाउंस किया गया था. ठीक है, और डॉगमा 95 की अगर बात करें तो इसमें कुछ 200 से ज़्यादा फिल्में बनी गई थी जिनको सर्टिफिकेट दिया गया था. डॉगमा 95 मैनिफेस्टो को फॉलो करते थे. तो ये आपको पता होना चाहिए. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो इसमें बहुत बारी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है. कभी आपसे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लिया है. डॉगमा 95 इज गोइंग टू गेट मैच्ड विद नेचुरलिस्टिक फिल्म मेकिंग विदाउट स्पेशल इफेक्ट्स. देखिए, अगर आपको पता है तो मतलब उसका इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, एंड इट इज एज रिसेंट एज जून 2024. Then there was another question, which of the following film directors were part of Dogma 95 filmmaking movement started in 1995. So Lars von Trier and Winterberg, they were the most prominent names. So you should remember the name of directors also as well. ठीक है, 5 डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये स्टार्ट करा है Dogma 25. It's a rehash version of Dogma 95 only. The names are also mentioned here. Okay, so kindly try to remember these names as well. Moving forward, so
I hope you learned something new. Give me your attendance again. If you have any reflections, you can write in the comment box. Let us move forward to the next important development, which is Booker Prize. So this time writers of Indian origins have also won this prestigious International Booker Prize for 2025. Heart Lamp, this book which is a translation, okay, it is a collection of 12 stories. This book has won International Booker Prize in 2024-5. So remember Heart Lamp. Who has written this book? This book is a translation of 12 short stories. Kiski? The short stories were written by Deepa Bhashiti, okay, and in Kannada language. Remember the language Kannada, and this was translated by Banu Mushtaq. Remember this, and this is a good step towards originality. Very good. Okay. So remember this current affair. This could be a very relevant current affair. Okay. Banu Mushtaq, she translated the work of Deepa Bhashiti. It's a collection of 12 stories. Why this is even more relevant? Because this time a work of regional language, Kannada language, has won this award. So kudos to them. मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए इंडियन ओरिजिन के बुकर प्राइज विनर्स कौन से रहे हैं. सर क्यों इतना सब कैसे लर्न करें? मैं जो भी कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अंडरस्टैंडिंग से कहता हूँ. एक बार देखो, आपसे पूछा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट प्रेस्टीजियर पुलिट्जर अवार्ड. एक बार आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज वन दिस अवार्ड. सो आपको अगर ये अवार्ड इस बार जीता गया है तो जितने भी इंडियन ओरिजिन, मैं इंडियन ओरिजिन शब्द यूज कर रहा हूँ, इंडियंस यूज नहीं कर रहा, ठीक है, इंडियन ओरिजिन्स कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है वो आपको पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, वेव्स. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. इट्स वेव्स समिट, अ ग्लोबल you can say event which was hosted by Prasar Bharati and Ministry of Information and Broadcasting. It was a global event, the World Audio Visual and Entertainment Summit, WAVES. You should also remember the full form of this event. Okay, the World Audio Visual and Entertainment Summit. This event was focused on establishing India as key hub for media and entertainment industry with strong emphasis on cultural diversity. So if you go through this advisory board, the biggies of film industry like Amir Khan, Amitabh Bachchan, even people like Adar Poonawalla, he was a CEO of this summit. So this becomes very important. Anything which is related to Prasar Bharati or IMBD, okay, this it becomes very important. Please remember the name of summit and you should also remember the dates. ठीक है, इतनी बार आपसे पूछ लिया गया है कि वेव समिट, दिस समिट वाज hosted on what date, इस तरह से आपसे पूछा जाता है. थैंक यू सर फॉर द लिंक थर्ड. ओके, थैंक यू पुरुषोत्तम, आई होप यू फाउंड इट यूजफुल. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन जब हम वेव्स की बात करते हैं ना, वेव्स इंडियन जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसका OTT का नाम भी है. ठीक है, स्टार्टेड बाय प्रसार भारती. ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, आपको ये याद रखना है. प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, दे स्टार्टेड दिस इन, ये नेम याद रखना. आपसे इतनी बार पूछा गया ये प्लेटफॉर्म कब शुरू हुआ था, इसको किसने लॉन्च किया था. ठीक है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. इसका कुछ आपके रिसर्च में आगे कभी काम नहीं आएगा. अभी अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे ना, आपको तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टैगलाइंस बताओ. ठीक है, तो इस OTT प्लेटफॉर्म है जिसपे 90s का जितना भी दूरदर्शन का कंटेंट था वो सारा अवेलेबल है. आप उसको देख सकते हैं, एक अच्छा करंट अफेयर बन सकता है. द एप्लीकेशन इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS. इट एम्स टू डिलीवर डाइवर्स कंटेंट अंडर द टैगलाइन याद रखना, वेव्स फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर. ठीक है, बहुत बारी आपसे करंट अफेयर के फॉर्म में टैगलाइंस भी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा. प्रसार भारती's OTT's platform waves is to provide clean family entertainment. It comes on VOD, video on demand. So there is SVOD, subscription video on demand. You pay certain amount and you get access to all the content, and there is advertisement model also other. ठीक है, so remember this thing, waves becomes important. You should also remember the chairperson who launched this. ठीक है, who was the chairperson of Prasar Bharati when this OTT platform was launched. ठीक है, so dear students, we are going to continue this today. The major focus should be on Dogma 95. Please go through it. Please go through the links which I have provided you on under this description box. They are all important. Then you should, what should be the next what should be the next step?
So I'll recommend all of you that please, there is a playlist on our channel which is current affairs and media aptitude. In it we have already covered this art and culture thing, okay, that which art form belongs to which state. So a lot of times, as recent as December 2023, you will find with this question, okay. We have already done it, so we are not going to repeat it. Newspaper circulation editors and taglines, we will do this in next class. The recent editors we can discuss about. Taglines we have already discussed. Every year there is a question, okay, match the following, who's the editor, even they are asking where is the head office of this newspaper, okay. Then award shows, okay, we will have one separate class on award shows, but don't be too dependent on that class. You all are media scholars, I will give you certain links, okay, please read them. You have to read it, who won the Cannes Film Festival award, who won the Academy award, so you should be thorough about it, okay. Then और भी चीज़ें हम करते रहेंगे, ठीक है. So I hope you learned something new. If you found this lecture helpful, kindly like this video. I can see 50 people live and only 40 people have liked this video. What kind of Swatela Vivar is this? So let us call this a day. Send all those smileys so that I get to know that you all are happy. Please be happy, dear students. This is just an exam. It is very important to keep your morale boosted. Then only you are going to perform well, okay. So take care, Ram, take care, Pritika, Vaishnavi, Divakar, thank you, take care, okay. We will meet in other class as well. Take care, bye bye. And if you have any doubt related to this movement or anything, you can write to me in the comment box. I look forward to reading your lovely comments. So kindly engage with this channel, okay. Okay, so many people are live at this late hour. I can see Sonali, then Adrika, Sejot, Akansha, Bidhan, Divya, Anshul, Venkat, Purushottam. There are other peoples also, but I know there is some reason they can't comment and all those things. So that's all.